Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to discuss another very important topic, that is sexual reproduction in animals. So let's move to the board. So sexual reproduction in animals, our next topic. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हम उसको डिटेल से कर चुके, एक एक चीज़ को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स को। और स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, एनिमल्स में मोस्ट ऑफ द एनिमल्स reproduce by sexual reproduction. और डियर स्टूडेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था शुरू में कि इट इन्वॉल्व्स मीन्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इन्वॉल्व्स two major processes. Number one is formation of gametes, and the second thing is fusion of gametes. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दो स्टेप्स में डियर स्टूडेंट्स होगी। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट स्टेप, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, इसमें सबसे पहले एक हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? और डियर स्टूडेंट्स, गैमेटो का मतलब होता है गैमीट और जेनेसिस का मतलब होता है टू प्रोड्यूस। मीन्स द प्रोसेस of formation of gametes is called gametogenesis. And students, what happens during this process? During gametogenesis, जहाँ तक इसकी डेफिनेशन याद रखिएगा, सो ड्यूरिंग gametogenesis, the diploid mother cells means 2N undergo meiosis and produce haploid means 1N gametes. So diploid मदर सेल्स जो होते हैं उनके अंदर मियोसिस होगी और उनके अंदर मियोसिस के बाद हैप्लॉइड गैमेट्स बनेंगे। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जो गैमेट्स हैं
They are formed in the specialized structures which are called as gonads. So what are gonads? The formation of gametes takes place in specialized structures in animals which are called gonads. So as sexual reproduction, it involves two parents, both parents. So gonads, they are of two types. The male gonads and the female gonads. तो स्टूडेंट्स जो मेल गोनेट्स होते हैं, these are testes for a singular it is testis. As we have got a pair, so they are called as testes. The testes present outside the abdominal cavity. मेल्स के अंदर जो गोनेट्स होते हैं, they lie outside the abdominal cavity in a skin called scrotum. While female gonads, these are called ovaries, singular is ovary, which are present inside the abdominal cavity. So this is abdominal cavity. यहाँ पर हमारी चेस्ट कैविटी, दो मेजर कैविटीज़ हैं, ये ऊपर चेस्ट कैविटी और उसके नीचे एब्डोमिनल कैविटी, जो मेजर डिविजन्स हैं। तो ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर मौजूद होती हैं द फीमेल गोनेड्स. नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द प्रोसेसेस. First of all, today we will discuss the process of formation of gametes in the males. So that is called as spermatogenesis. So spermatogenesis, dear students, the process of formation of sperms in testes is called spermatogenesis. So dear students, I'm just showing one testis.
This is scrotum and this is testis. इसके अंदर मौजूद होती हैं, there are many tubules which are called as seminiferous tubules. So dear students, इन seminiferous tubules के अंदर प्रोसेस होगा स्पर्मेटोजेनेसिस का. So there are present diploid cells in the germinal epithelium. डिस्टेंस जर्मिनल एपिथेलियम ये मौजूद होती है इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर. These cells, ये जो सेल्स होते हैं, these cells of germinal epithelium undergo repeated mitotic divisions and form diploid cells which are called spermatogonia. Clear? These are diploid cells which are produced by the division in the germinal epithelium of these seminiferous tubules. These spermatogonia, the spermatogonia give rise to primary spermatocytes and these are also diploid. And these primary spermatocytes they undergo the first meiotic division, that is meiosis 1, and form secondary spermatocytes. और डियर स्टूडेंट्स, चूंकि यहाँ पर meiosis 1 हो चुकी है, द रिडक्शन डिवीजन हैज स्टार्टेड, सो उस पर जो सेल्स होंगे जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने हैं, दिस विल बी 1n, मीन्स दे आर हैप्लॉइड. क्लियर? देन द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स they undergo meiosis 2, the second phase of meiosis, and form non-motile. Non-motile का मतलब डियर स्टूडेंट्स जो मूव नहीं कर सकते, जो मूवमेंट नहीं शो कर सकते, non-motile spermatids which are also haploid. Clear? चूंकि ये नॉन मोटाइल होते हैं तो इनका भी फिलहाल कोई रोल नहीं है इसमें रिप्रोडक्शन में, जब तक ये कन्वर्ट ना हो जाएं इनटू स्पर्म्स. सो दीज स्पर्मेटिड्स undergo structural changes in which the nucleus is reduced
a corner is formed which is called acrosome. Acrosome, nucleus, acrosome, and a mitochondrial ring. Followed by a tail. So this structure is called as, after these changes, the resulting structure is called a sperm, which is motile. ये मूव कर सकता है. Now it can move into the reproductive tract. Dear students, यहाँ पर इसका फ्लो चार्ट जो कि इम्पॉर्टेंट है, आपने भी ड्रॉ करना है इसको. Here we start. So this is spermatogonium. Which is diploid. It will undergo mitosis and will be converted into another cell which is called primary spermatocyte. So this primary spermatocyte is again diploid as it is formed by mitosis. Now this primary spermatocyte, it will undergo meiosis 1 and it will form two secondary oocyte, two secondary spermatocytes. So these are secondary spermatocytes. तो चूंकि डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर meiosis 1 हुई, नाउ दे हैव बिकम हैप्लॉइड और इनके अंदर फिर होगी meiosis 2. The secondary spermatocytes, they will undergo meiosis 2, the second phase of meiosis, and they will form spermatids. So each secondary spermatocyte, it will give rise to two spermatids. So total there are 4 spermatids which are formed from one primary spermatocyte. एक primary spermatocyte से 4 spermatids बने. All these are the spermatids. So as I told you that these are non-motile, ये मूव नहीं कर सकते, तो ये तभी फ़ायदेमंद होंगे जब ये कन्वर्ट होंगे इनटू स्पर्म्स. तो इनके अंदर कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगी. इनका जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा
श्रिंक करेगा, ऊपर एक कॉर्नर बनेगा इस तरह से। Mitochondrial ring, then there is tail, here is nucleus, so after these conformational changes, this structure is called as the sperm. One more, because 4 spermatids bane, so they will give rise to 4 sperms. Now I'm going to label this. ये वो कॉर्नर वाला जो स्ट्रक्चर बना है, दिस इज कॉल्ड एज एक्रोसोम। और डियर स्टूडेंट्स, एक्रोसोम का फंक्शन क्या है कि जब एग सेल के साथ ये फर्टिलाइज करेगा तो एक्रोसोम विल रिलीज सर्टेन एंजाइम्स जो कि इसको हेल्प करेंगे फ्यूजन विद द एग सेल। दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज माइटोकॉन्ड्रियल रिंग। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में स्पर्म ड्रॉ करने के लिए आ सकता है इसका स्केच, क्लियर। और ये इसकी टेल, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ sperm, which is a motile. Clear? So dear students, hopefully spermatogenesis आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और oogenesis को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।